Hello everyone, we are back on your favorite learning platform, Learn Forward, and we are going to study from Feathercap, and we are on chapter number 2, that is the Northern Mountains. I hope everything is clear, and please be ready with your books. We are going to start the chapter now. So we have studied about Northern Mountains also. Northern Mountains basically are Himalayas. So Himalayas is also divided in three parts, that is Himadri, Himachal and Shivalik. So आज हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दीज रेंजेस आर डिवाइडेड और ये कहाँ कहाँ पे हैं और व्हाट अबाउट देयर हाइट्स एवरीथिंग व्हिच गोज इन दिस रीजन. Okay, so let's get started now. The northern mountains include the Himalaya and the Karakoram mountain ranges. So northern mountains में there are two ranges. First is Himalayas and second is Karakoram. The Himalayas is the highest mountain range in the world. So in the whole world, Himalayas are the highest range. The word Himalayas, the Himalayas के पीछे भी एक meaning है. What is the word Himalayas mean? Himalayas का मतलब है abode of snow, मतलब स्नो का घर, abode of ice basically, कि जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही है. It extends from Ladakh in the north to Arunachal Pradesh in the east. So जो हिमालयाज हैं वो लद्दाख से स्टार्ट होके दे मूव टू द अरुणाचल प्रदेश, मतलब नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक यू विल फाइंड द हिमालयाज. It looked like an arc. Here you can see they have shown that how it starts from Ladakh and Arunachal Pradesh tak you can see the Himalayas. It's like a arc. It forms a shape like this. The Union Territory of Ladakh and Jammu and Kashmir and the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, northern part of West Bengal and eastern states lie in the Himalayan region. So ये कौन कौन सी जगहों को कवर करता है? फर्स्ट इज यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. सेकेंड, देयर आर सम स्टेट्स ऑफ हिमाचल एज वेल इन दिस. Another is Uttarakhand, Sikkim, the northern part of the West Bengal. West Bengal का northern part भी इसके अंदर cover होता है. Eastern states also lie in the Himalayan region. So these are the places which are covered by the Himalayas. The Himalayan mountain run in parallel ranges from north to east. So जो Himalayan mountain है basically ये parallelly run करते हैं. That is parallel. What do you mean by parallel? Two lines which never meet, right? So जो ये है इस इनकी जो ranges हैं वो इकट्ठे साथ साथ run करती हैं. What is mountain range? The chain of mountains it is known as mountain range. जहाँ पे continuous line में mountains होंगे it is known as a mountain range. A series of mountains more or less in a line is called a mountain range. So the region can be divided into four zones. So जो Himalayan region है इसको हम divide भी कर सकते हैं basically. So the main three are, first is Great और Upper Himalayas, Himadri, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं. First is the Great and Upper Himalayas. Second is the Lesser or Middle Himalayas, which is known as Himachal, जो हिमाचल वाली साइड को cover करता है. So that is Lesser or Middle Himalayas. And the third one is the Lower Himalayas, जो आपके नीचे हाइट के, कम हाइट के जो mountains range है, that is known as Shivalik. And the last one is the northeast hills, northeastern hills. So northeastern hills में जितने भी आपके इस साइड वाला एरिया है which is covered by the Himalayas, वो वाले जो mountain ranges हैं वो northeastern hills में cover होते हैं. So the Great और Upper Himalayas, first is हिमाद्री जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें आएंगे आपके Great और Upper Himalayas. So the northernmost ranges of the Himalayas are the highest and are called Great Himalayas. So जो northernmost range है सबसे ऊपर वाली which is at the top and the highest one, that is known as the Great Himalayas. The average height of the mountains in this range is 6,000 meters above the sea level. So जो आपका एवरेज हाइट है ग्रेट हिमालयास की और अपर हिमालयास की, it is about 6,000 meters. Mount Everest of this range is the highest peak in the world. So जो Mount Everest है, which is the highest peak in the world, it also lies in the upper Himalayas. It is in Nepal, or this Mount Everest lies in Nepal. This is not in India. Please don't get confused. जो Mount Everest है, it is in Nepal. So the highest peak of India is it is Kanchenjunga, which is in Sikkim. Karakoram range lies in China, Pakistan and India. See,
northern mountains are divided in two regions. We have seen first range is Himalayas and second one is Karakoram range. और जो Karakoram range है that covers China, Pakistan and India. ये थ्री आपको कंट्रीज में काराकोरम रेंज मिलेगी. और जो काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है दैट इज K2 और द हाइट ऑफ K2 इज अराउंड 8611 meters. It is situated on the border of the Pakistan and China. और जो ये K2 peak है which is the highest peak of Karakoram range, ये lie करती है on the borders of Pakistan and China. It is the second highest peak in the world. So जो K2 है वो second highest है. First is Mount Everest. Next is Kanchenjunga. Kanchenjunga is around 8586 meters. And another one is Dhaulagiri and Nanda Devi. So these are the other high peaks and the Kanchenjunga is the highest peak in the India. So first one is Mount Everest which is in Nepal. Second one is K2 which is on the borders of Pakistan and China, and another one is Kanchenjunga which is the highest peak of India. The height of Kanchenjunga is 8586 meters. Many mountaineers tried to climb these peaks. बहुत सारे mountaineers हैं जिन्होंने इन peaks को climb करने का try करा है. Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand were the first to climb Mount Everest in 1953. So these were the two people who climbed the Mount Everest for the very first time in the year 1953. 1953 में Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand, these were the two people who climbed the Mount Everest. And there was an Indian woman as well, Miss Bachendri Pal. She also climbed this peak in 1984. So you should learn these two dates, 1953 and 1984. First is what it was climbed in 1953. Then an Indian woman climbed this mountain whose name was Miss Bachendri Pal in year 1984. So these high peaks always remain covered with ice. So इतनी height पे होने के बावजूद, इतने high altitude के होने के बाद भी ये जो आपकी peaks हैं, these are always covered with the ice. No plants grow and no animals live here. Why? Because the weather is very cold. So वहाँ पे vegetation के लिए, cultivation के लिए possible है ही नहीं. वहाँ पे weather conditions allow नहीं करती हैं and कोई भी animal वहाँ पे survive नहीं कर सकता है. So big pieces of ice move down very slowly into the valleys and form glaciers. और जो बड़े बड़े ice के pieces होते हैं that move down to the valley and they form the glaciers. Glaciers are basically a mountain of ice. So what is the function of the glaciers? Glaciers का basic काम क्या है? Glaciers जो होते हैं जब वो melt होते हैं they give water to the rivers. जो आपके rivers हैं perennial rivers जो जिनमें 12 months आपका you will see the water कि वो कभी भी ड्राई अप नहीं होती हैं. वाई? बिकॉज जो उनका सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज ग्लेशियर्स. वैलीज आर लो एरियाज बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स. वैलीज क्या हैं? वैलीज लो एरियाज हैं जो माउंटेन्स और हिल के बीच में एक छोटे लो एरिया जो लाई करता है किसी भी दो माउंटेन्स के बीच में, दैट इज नोन एज द वैली. मोस्ट ऑफ अवर बिग रिवर्स गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र कम फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स. सी जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उससे रिवर्स का सोर्स बनता है. सो देयर आर सम ग्लेशियर्स विच आर नोन एज गंगोत्री, यमुनोत्री. सो ये जो है ये इसके रिवर्स के सोर्स हैं वो ग्लेशियर्स. These rivers get water from the Himalayas all the year. और जो रिवर्स हैं इनको हिमालय से रेगुलर all the year पानी मिलता है. So that's why they are never dry. Thus they keep on flowing throughout the year. So ये जो rivers हैं ये पूरे year आपको you will see water in them. So this was your upper Himalayas. Now we will move to lesser or middle Himalayas, which is known as Himachal or lies in Himachal. Average height of this range is about 5,000 meters. So average height of upper Himalayas was 6,000 and the average height of lesser or middle Himalayas is 5,000 meters. It has many passes at great heights. What is passes? Passes कोई ऐसा रास्ता जो दो आपका माउंटेन्स के बीच में से होता हुआ कोई नैरो सा भी वे हो, दैट इज नोन एज अ पास. सो इसमें आपके बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं ग्रेट हाइट्स पे. अ नैरो वे ओवर और थ्रू माउंटेन्स इज कॉल्ड अ पास. कोई भी ऐसा रास्ता जो कि माउंटेन से होता हुआ जा रहा हो उसे हम पास बोलते हैं. देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, सेडार, ओक एंड फिर. सो बहुत सारे फॉरेस्ट इसमें देखने को मिलेंगे और जो मेन यहाँ पे ट्रीज मिलेंगे फॉरेस्ट में दैट इज पाइन, सेडार,
oak and fir. So these are the four main trees which you can found in the forest of lesser or middle Himalayas. The weather is cool and pleasant here in summer. जो weather होता है यहाँ पे ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा pleasant होता है summers में. Millions of tourists visit here during summer. You know when there are summer vacations आप लोग कहते हैं we will go to the place which is colder than the place where you are living. ठीक है. So बहुत सारे tourist ऐसे होते हैं जो summers में यहाँ पे visit करते हैं. They also come to watch snowfall in winter. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो winter में visit करते हैं क्योंकि winters के time पे there is a lot of snowfall in this region. So अब इसमें लेसर और मिडिल हिमालयाज में देखेंगे कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कवर होती हैं और सॉरी कौन कौन सी आपकी प्लेसेस हैं, सिटीज हैं बेसिकली. सो फर्स्ट इज श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, Almora, Nainital and Darjeeling. These are some beautiful hill stations of this range. So these all lie in the lesser or middle Himalayas. These all the hill stations. I'm going to repeat again. Srinagar, Shimla, Kullu, Manali, Mussoorie, Almora, Nainital and Darjeeling. And Kedarnath or Badrinath are also situated in this range. जो केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं, they are also in lesser or middle Himalayas. So now we move to lower Himalayas और शिवालिक रेंज. जो lower Himalayas इनकी height is काफी low. So we will see now it is the lowest range as we have seen. जो first वाले थे उनकी height was 6,000. Middle Himalayas की height was around 5,000 and we will see the height of शिवालिक range. The average height of this range is about 1250 meters above the sea level. See, इसकी जो height है that is very low then if we compare from both of them. So 1250 meters is for lower Himalayas. It gets heavy rainfall during summers. जब summer season होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा rainfall होती है. So जो slopes होते हैं that are covered with thick forest. और rainfall होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा slopes पे बहुत ज़्यादा thick forest देखने को मिलेंगे. There are many valleys between the middle and the lower Himalayas. So जो lower Himalayas और middle Himalayas हैं उनके बीच में बहुत सारी valleys situated हैं. उन्हें इन वैलीज को बोलते हैं दून्स. दे आर नोन एज दून्स, DUNS. सो देहरादून इज ऑल्सो वन ऑफ देम. द लैंड एट द फुट ऑफ द शिवालिक रेंज इज वेरी फर्टाइल. जो शिवालिक रेंज का आपका लैंड है, फुट है बेसिकली, स्टार्टिंग है, दैट इज वेरी फर्टाइल बिकॉज क्योंकि वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से वहां पे कल्टिवेशन इज ईजी. इट इज कॉल्ड द तराई रीजन. इसको तराई रीजन के नाम से भी जानते हैं. इट इज कवर्ड विद लॉन्ग ग्रास. यहाँ पे बहुत लंबी लंबी ग्रास और थिक फॉरेस्ट ऑफ टीक, केन, बैम्बू एंड साल. ये कुछ हमारे ऐसे ट्रीज हैं विच यू कैन फाइंड इन द लोअर हिमालयस और शिवालिक रेंज. दैट इज टीक, केन, बैम्बू एंड साल. इट इज रिगार्डेड एज स्टोर हाउस ऑफ वुड. So जितने भी ये teak, cane, bamboo और साल हैं, they are used for many purposes. They are used for medicines, to make herbs, medicines and furniture as well. So इसको wood का store house बोला जाता है इस region को basically. Tigers, elephants, panthers, deers and rhinoceros live here. So these are few animals which are common in this region. That is tiger, elephants, rhinoceros and panthers and deer. So these were the three ranges of the Himalayas. Now we will move to the northeastern hills. The mountains in the northeast are not very high. जो northeast के mountains हैं वो बहुत ज़्यादा height के नहीं हैं. These are really hills. These are basically hills. जो mountains से कम height के आपके landforms होते हैं with the peak that are known as hills. So the northeastern hills are the Patkai hills, the Naga hills, the Lushai hills. So ये three hills हैं जो northeastern hills में situated है. That is Patkai, Naga and Lushai. Close to these areas are the Garo, खासी, द जैंतिया हिल्स. सो थ्री हिल्स हैं जो इसके बावजूद हमें और मिलती हैं. दैट इज गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स. दे गेट हेवी रेनफॉल इन समर्स. समर्स में दे रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड दे आर कवर्ड विद ग्रीन फॉरेस्ट. सो इस यहाँ पे भी रेनफॉल होने की वजह से जो फॉरेस्ट हैं दे आर एवरग्रीन. थिक फॉरेस्ट आर फाउंड देयर. नाउ यूज ऑफ द हिमालयस. अब हिमालयस जो है हमारी कंट्री में दे आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ रीजन. वी हैव सीन. सो इनका काम क्या है बेसिकली जो हिमालयस हैं दैट आर गिफ्ट टू द इंडिया. हाउ? हिमालयस जो हैं दे आर बेसिकली द बैरियर. ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत नेबरिंग कंट्रीज से भी. एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द विंड्स दैट कम फ्रॉम साइबेरिया. सो नाउ वी विल सी हाउ हिमालयस आर यूजफुल फॉर इंडियंस.
The Himalayas is very useful to India. It guards our northern border. So जो northern border है हमारी country का, that is guarded by Himalayas. It protects us from the very cold and dry winds coming from the Siberia. So जो winds बहुत ज़्यादा cold और dry winds that come from Siberia, उसको ये protect करते हैं हमें उससे. The Himalayas checks rain-bearing clouds coming from the sea. They rain heavily along the northern plain. सब जो हिमालयाज हैं, ड्यू टू ऑफ इट्स हाई ऑल्टीट्यूड, जो हिमालयाज हैं वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय हिमालयस टोटली. सो जो रेन होती है नॉर्दर्न प्लेन में, दैट इज बिकॉज ऑफ हिमालयाज ओनली. इट इज अ ह्यूज स्टोर ऑफ आइस एंड रेन वाटर दैट फीड द रिवर्स ऑल ईयर अराउंड. सो जो हिमालयाज है बेसिकली वहाँ पे आइस और रेन वाटर, हाँ, जो आइस और रेन वाटर है उससे हमारी जो रिवर्स हैं दैट गेट वाटर ऑल ओवर द ईयर. सो जो रिवर्स है, रिवर क्या करती है, रिवर इरिगेट्स द प्लेन एंड मेक द लैंड मोर फर्टाइल. सो इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के, दैट आर वेरी सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. So the river irrigate the plains and help in generation of hydroelectricity also. So what is hydroelectricity? Hydroelectricity is जो आपकी electricity which is generated by the water with the help of the flowing water. So that is known as hydroelectricity. So rivers help करती हैं generate करने में hydroelectricity भी. The forest and the wild animals form our natural wealth. जो यहाँ के forest हैं और wild animals हैं, they are our natural wealth. The forest provide us with valuable furniture, wood and herbs. So जो forest है वो हमें valuable furniture देते हैं, मतलब that हमें बहुत सारे trees देते हैं. As we have seen, there are variety of trees. और उससे हमें furniture के लिए wood भी मिलता है and herbs भी मिलते हैं. So next, life in the northern mountains. ये अभी हमने cover किया Great Himalayas जितने भी थे हमारे 3 types of and northern hills. Now we will move to the northern mountains कि वहाँ पे लोग life कैसे जीते हैं. How, what work they do, what do they wear, what do they eat. So we are going to study now that. The land features influence the life of the people at different places. You have seen कि जो लोग mountains पे रहते हैं और plains में रहते हैं, उनके lifestyle में, eating patterns में या dressing करने में, that is there is a lot of difference, right? क्यों? क्योंकि वो जो features होते हैं, land features होते हैं, basically they influence the life of the people. Thus, the lifestyle of people differ from place to place in India. So, जो जैसे हमने देखा इंडिया में there are different landforms. So, जो हर landform का जो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे उनका lifestyle बिल्कुल अलग होगा and that is totally affected by the landform of that area. A number of rivers rising from the northern mountains have formed narrow and fertile valleys. जो rivers आ रही हैं northern mountains से, इससे बहुत सारी narrow और fertile valleys जो हैं form हुई हैं. People live among these valleys. और जो लोग हैं वो इन valleys में रहते हैं. These valleys are famous for their orchards. So जो ये valleys हैं, they are basically famous for their orchards. Orchards yield rich crops after year after year. जो orchards होते हैं इनमें हर साल बहुत अच्छे crops जो हैं yield होते हैं. The farmers cut wide steps on gentle hill slopes. So जो farmers होते हैं वो hills के ऊपर छोटे छोटे स्टेप्स कट करते हैं. यू हैव सीन व्हेनेवर यू हैव बीन टू माउंटेन्स कि वहाँ पे स्टीप फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग जिसे बोलते हैं. वो जो करते हैं वो माउंटेन के स्लोप्स पे स्टेप्स काटते हैं और उसके ऊपर फार्मिंग होती है. सो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये पिक्चर में आपको पता लगेगा. दीज आर स्टेप्स और इसके ऊपर फार्मिंग की जाती है माउंटेन्स के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे प्लेन लैंड नहीं मिलता है. सो दे हैव टू डू इट लाइक दिस. तो जो ये स्टेप्स होते हैं, दीज आर बेसिकली देयर स्मॉल फील्ड्स. ये उनका छोटा से फील्ड का काम करती हैं और दे आर नोन एज टेरेस फील्ड्स. जैसे टेरेस फील्ड भी बोलते हैं. राइस इज मेनली ग्रोन इन सच फील्ड्स. सो जो मेन क्रॉप है जो स्मॉल टेरेस फील्ड्स पे कल्टीवेट होती है, दैट इज राइस. सम पीपल रियर शीप. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शीप और गोट्स को रियर करते हैं. सम पीपल आर वेंडर्स. और बहुत सारे लोग वहाँ के वेंडर्स होते हैं, वो गुड्स को सेल करते हैं लोगों की नीड के लिए. सो दे यूज याक्स एंड म्यूल्स टू कैरी देयर लोड. सो जो याक्स और म्यूल्स है, दे आर द very common animals which you will find in the mountains. So they use yaks and mules to carry the loads. क्योंकि जो सामान है basically वो आप उठा के नहीं ले जा सकते, बहुत heavy होता है. So yaks and mules are used to carry the loads.
Now Ladakh. So first is Ladakh. We will study about Ladakh. Ladakh is situated in the northern part of India. Ladakh हमें पता है, that is in the northern part. It is a cold desert of our country. जो लद्दाख है ये basically cold desert है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड. हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से लद्दाख इज फ्रीजिंग कोल्ड. लद्दाख में हमेशा बहुत ठंड रहती है एंड ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. द रेनफॉल इन दिस रीजन इज लो एज 10 सेंटीमीटर एनुअली. सो जो यहाँ की रेनफॉल है वो इतनी ज्यादा कम होती है कि 10 सेंटीमीटर एनुअली, एक साल में कम से कम बस 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है. बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ड्राइनेस यू वुड फाइंड स्पार्स वेजिटेशन इन द एरिया. ड्राइनेस की वजह से, इतनी ड्राइनेस होने के बाद और लो रेनफॉल की वजह से जो यहाँ पे वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, वो पॉसिबल नहीं है. सो बहुत रेयर होगा कि यहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को मिले. बहुत सारी स्पीशीज हैं बर्ड्स की, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, रेवन एंड हुप्पू. दीज आर द कॉमन इन लद्दाख. दीज बर्ड्स आर कॉमन. Ladakh is blessed with many Buddhist monasteries, so you will find a lot of Buddhist monasteries in Ladakh. Leh is the capital of this union territory. As we know, Ladakh is the union territory, so capital of Ladakh is Leh. This is a major tourist attraction for the tourists. So Leh is the main attraction for the tourists. Due to the scarcity of resources, people understand their value and conserve them. So resources इतनी कम होने की वजह से लोग उसे कंजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को. सो जो ड्रेस, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल है लद्दाख की वो सेम है एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो जो जम्मू कश्मीर है हमारा, दैट इज द यूनियन टेरिटरी. सो जो ड्रेस, लैंग्वेज और स्टाइल वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, दैट इज फॉलोड इन लद्दाख ऑल्सो. So now we will study about Jammu and Kashmir. The Kashmir Valley is very beautiful. As we all know, Kashmir is very famous for the valleys. Glittering lakes surrounded by trees and snowy and sunny mountains looks like heaven on the earth. जो वहाँ की lakes है, that are surrounded by the trees, snowy and sunny mountains, तो वो ऐसे लगता है, it feels like the heaven on the earth. So Kashmir is also known as the heaven on the earth because of this only. The famous Dal Lake is situated in Srinagar. So the major tourist attraction is Dal Lake also. It is situated in Srinagar. Srinagar is the capital of this union territory, that is Jammu and Kashmir. There are many houseboats in this lake. So why Dal Lake is so famous? क्योंकि वहाँ पे houseboats चलती हैं. People live in houseboats there. The tourists stay in these boats, and this is the house. This is the shikara, which is basically used for the tourists. And इस पे जो होता है, goods are also sell. People sell goods also, and houseboat is like a boat which has a house, all the facilities of a house in it. So thousands of tourists in Kashmir Valley visit Kashmir Valley each year. हर साल बहुत लोग कश्मीर visit करते हैं. The devotees come to the Amarnath cave and Vaishno Devi. So there are two places which are very famous, that is Vaishno Devi and Amarnath cave. लोग यहाँ पे जाते हैं. Gulmarg is famous for its fine meadows. जो गुलमर्ग है, that is also very famous. Both men and women wear loose woolen shirt, that is called firan. जो men और women होते हैं, you have seen कि वो बहुत बड़े बड़े shirts पहनते हैं till here. So that is known as firan. उसे firan बोलते हैं. With the firan they wear a salwar, और firan के साथ they wear salwar as the bottom. In winter they hang kangris under their firans to keep them warm. So अपने आप को warm रखने के लिए इतनी ठंड में they use kangris. A kangri is a small cane basket with a earthen fire pot inside. जो kangri होता है एक छोटा सा basket होता है cane का बना हुआ, जिसके अंदर earthen pot होता है. Kashmiris like to drink kahwa. So there is a green tea which is very popular in Kashmir, that is known as kahwa. People in Jammu and Kashmir speak Kashmiri. जो वहाँ के लोग हैं, they use the Kashmiri language, और Ladakhi और Dogri and Urdu. These are the 4 languages of the Jammu and Kashmir. They are fond of singing and dancing, और लोगों को वहाँ के dancing और singing बहुत ज़्यादा पसंद है. Their roof dance is very popular. So this is a kind of a dance, ROUF roof, which is very popular in Jammu and Kashmir. Kashmiri farmers grow rice in the valley or on hill slopes. So जो Kashmiri farmers होते हैं, they grow or cultivate the rice. They grow many fruits in the orchards like pears, peaches, apples, apricots, cherries, walnuts and almonds. So ये सारे बहुत सारे orchards हैं which you will find in Kashmir, that is pears, apples, apricots, cherries, almonds, etc.
So saffron is also grown in some areas. As you know, saffron is a very, you can say very expensive spice, one of it. Okay, so saffron क्या होता है, यहाँ कश्मीर में grow किया जाता है, and जो saffron है वो basically क्या करता है, it gives taste and color to the dish. Some people are engaged in animal grazing and rearing also. So बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे animal grazing करवाते हैं and rearing का काम करते हैं. Some people are good craftsmen. They weave woolen clothes, pashmina shawls, blankets and carpets. So being at high altitude, जहाँ पे लोग जो है woolen clothes weave करते हैं, they weave pashmina shawls, blankets and carpets, and some of them make handicrafts of wood, brass and paper mash. So बहुत सारे handicrafts भी बनते हैं, wood के भी हो सकते हैं और brass के भी. You will find a lot of variety of handicrafts in the Kashmir. Next is Himachal Pradesh. There are mountains, hills, valleys and rivers in Himachal Pradesh. Shimla is the capital of the state. So, Shimla is the capital of Himachal Pradesh. It is a popular hill station. As we know, Shimla is very popular hill station. And Kullu, Manali and Kufri are other beautiful stations. These all lie near. ये जो है सब आसपास ही हैं. So, and Jwalamukhi temple in Kangra district is very famous. So, you should know that there is a temple in Kangra which is known as Jwalamukhi temple. It is very famous. The people of Himachal Pradesh are simple, honest and hardworking. The people of Himachal are very simple. They lead a very simple life. They are very honest and hardworking. They like to wear bright colorful clothes. और जो वहाँ के लोगों को bright colorful clothes पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है. The people in Himachal Pradesh speak Hindi and Pahari languages. So जो हिमाचल के लोग हैं, they use two languages, that is Hindi and Pahari. They are very fond of dancing and flute playing. और जो लोग हैं वहाँ के उनको dancing और flute play करना बहुत ज़्यादा पसंद है. Nati is a popular folk dance. So Nati is a popular folk dance of Himachal. You should learn that. The people celebrate, जो festivals वहाँ celebrate किए जाते हैं, that are Dashera, Shivratri, Diwali with great pomp and show. बहुत ज़्यादा हंसी खुशी के साथ ये वाले जो फेस्टिवल्स हैं दे आर सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश. कुल्लू एंड कांगड़ा वैली आर स्पेशली फेमस फॉर देयर दशहरा सेलिब्रेशन. सो कुल्लू एंड कांगड़ा, यस, कुल्लू एंड कांगड़ा वैली, these places are very famous for the Dashera. Farming is the main occupation here. A lot of people practice farming in this region. The food crops which are grown by people are wheat, maize, rice, potatoes. Fruits like apples, apricots, plums, peaches and grapes are grown in plenty. So these are some fruits which are grown in plenty. Some people are good craftsmen. They make wooden toys, trays along with the shawls and carpets. Some people rear sheep and goats. So जो वहाँ के लोग हैं उन्हें wooden toys और trays वो लोग बनाते हैं. They use it along with the shawls and carpets, along with the weaving के अलावा भी वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं. That is your wooden toys, trays, and some people also rear sheep and goats. So next is now Garhwal and Kumaon, that is in Uttarakhand. On going from north to east, so north to east जाते we have studied north now. Now we will move to Uttarakhand. The middle part of the Himalayas lies in the state of the Uttarakhand. So when we move from north to east, there is the middle part which is in Uttarakhand. Locally this area is called Garhwal or Kumaon. Mainly these areas which lies in the center of the middle part of Himalaya, that is known as Garhwal and Kumaon. So Mussoorie in Garhwal and Nainital is in Kumaon. So these are the two famous hill stations of the Uttarakhand, Mussoorie which is in Garhwal and Nainital which is in Kumaon. These are the famous hill stations of the Uttarakhand. The Ganga, Yamuna and many small rivers rise from here. So जो गंगा और यमुना है, ये छोटी छोटी रिवर्स जो हैं, ये इनका जो ओरिजिन होता है यहाँ से फ्लो होती ही आती है. Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath in the mountains are famous places of pilgrimage and tourist interest. So जो लोग visit करते हैं मंदिर, you know, Gangotri, Yamunotri, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये माउंटेन्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं among as the pilgrimage. The people of Garhwal and Kumaon like to wear bright colorful clothes, long shirts and pajamas. So जो यहाँ के लोग हैं उनका dressing is that they love to wear bright color clothes along with shirt and pajamas.
they grow rice. Things which they cultivate there is rice, wheat, maize and vegetables. Some people rear sheep and goats also. Okay, now we will move to Sikkim. Sikkim is a small state wholly situated in Himalayas. Sikkim एक बहुत छोटा सा state है which is in Himalayas only. It is just between Nepal and Bhutan. So Sikkim lies between our two neighboring countries, that is Nepal and Bhutan. Kanchenjunga, which is the highest peak of India, it is situated in Sikkim only. So the highest peak of India, that is Kanchenjunga, it is in Sikkim. It is the third highest peak in the world. Gangtok is the capital of the Sikkim. So Gangtok is the capital of Sikkim. There are many Buddhist monasteries in this state. So Ladakh में भी हमने देखा बहुत सारी Buddhist monasteries हैं, and Sikkim also. Bhotiyas, Lepchas and Nepalis people live in Sikkim. So these are three kinds of people which you will find in the Sikkim, that is Bhotiyas, Lepchas and Nepalis. They wear colorful clothes, they wear masks while they dance. So there is a dance in which they wear masks, they play music on long bamboo horns. So you can see in the on the internet, you can check it on the internet, that the people of the Sikkim love to play the music using the long bands of bamboo. Food of the people, food which people like there is rice, pulses, vegetables and yak's milk. So ये चीजें जो हैं खाने की वहाँ पे they are frequently used. और farming जो है वो आपका main occupation है. Oranges, apples, cardamom, areca nuts and ginger are the major products. And weaving and handicrafts are the main cottage industries. So two main cottage industries of the Sikkim are weaving and handicrafts. और जो farming है that is the main occupation of the Sikkim. Now we will move to Darjeeling. Darjeeling is the hilly area near Sikkim. So Darjeeling also situated in the northeast part of the India. It is the hilly area near the Sikkim in the state of West Bengal. जो Darjeeling है, it is situated in West Bengal. It is the most famous hill station in the eastern part of India. So India का जो eastern part है, Darjeeling is very famous. Darjeeling hills are also known for their high quality tea. So जो टी के वो होते हैं आपके जहाँ पे टी ग्रो होती है या कॉफी ग्रो होती है, so these places, Darjeeling, Assam, ये places ऐसी हैं जहाँ पे इनका cultivation बहुत ज़्यादा होता है. So Darjeeling is very famous for its high quality. I hope everything is clear till now. Happy learning. We will move to the another part of the chapter in the next video. Thank you.